Yep, it is the time of the reverse fixtures. So Lucknow is now going to Chennai. Will you go higher in the ranks with a good team? Who knows? Let's discuss everything about Lucknow and Chennai on your show cricket.com Fantasy Center. तो स्मॉली ग्राइंडिंग ऑप्शन सब कुछ डिस्कस करेंगे. विल मोइन एनी बॉल इन द पावर प्ले, किसके लिए गायकवाड़ वेट कर रहे हैं, सब कुछ बात करेंगे इस शो में. तो लेट्स वेस्ट नो टाइम. यू नो इट इज शो टाइम. लेट्स स्टार्ट द शो. चीयर्स. हेलो, स्वागत है आपका cricket.com फैंटेसी सेंटर में, होम ऑफ असली फैंटेसी क्रिकेट. एंड वेरी स्मार्टली प्रोड्यूसर साहब ने ऑलरेडी डिस्क्लेमर आपको बता दिया है कि दिस गेम्स इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, सो प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एट योर ओन रिस्क. तो डू नॉट फॉरगेट दैट व्हाइल यू इन्वेस्ट. तो लेट्स गेट बैक टू असली फैंटेसी क्रिकेट. व्हाट इज असली फैंटेसी? इफ यू डोंट नो येट, डोंट वरी, यू हैव इट कवर्ड. It is simply 7:4 combination. Submit your teams. That is all you can do. You can use CricCrazyNIKS teams as well. And of course, you can win a decent amount if you get the right contest. So don't worry about anything else. Just download the app. Link आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ट्राई कीजिए खुद से ताकि सब कुछ एकदम बढ़िया चले आपके लिए. तो now let's get cracking in terms of the data for the game. उसके पहले एक बार ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो कैसा दिखेगा. So this is what it look like. Neat and clean. Fixtures to your left. कौन सा गेम चूज करना है, पिक एंड चूज. रिसर्च करने के टाइम पे बेस्ट वे टू डू इज होमवर्क बाय योरसेल्फ. तो यू कैन गो टू रिसर्च, क्लिक ऑन द गेम, यू विल गेट एवरीथिंग देयर. टीम डेटा, प्लेयर डेटा, वेन्यू डेटा, एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड योर ओन टीम्स एंड आल्सो यूज द एआई टीम्स, सो टू से. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Just download the app and check it out and do let us know how you find it. Now let's go back to the main part about this game, that is the key game factors. So Lucknow versus Chennai, we saw what happened in the last game. Chennai huffed and puffed, found a way with good flourish from MS to get to us good to go to a good score, but could not win because KL Rahul played a blinder, and Chennai kept waiting, but the chance never came from KL, and when it came, it was too late. So Lucknow Chennai overall, one was abandoned, which we know rain curtailed. So CSK won one game. Moon was player of the match there. Again, very surprising that he did not bowl in the last game more than 1 hour. LSG is 1-2. So recent record, of course, in favor of LSG, but Chennai will have to do a few things right to get the win in front of them. So that is the overall head-to-head record. Now, coming to the toss and how impactful are those conditions here. So again, historically, it is something that's always been very tricky, that some surface very high scoring, but some not so much. So you'll have to be very sure of your visualization. I think the KKR game was a surprise, but enough hint that there will be some turn, which again you hope will be enough for Ravi Jadeja to make an impact, even more nearly to bowl, because the runs are still being scored. 172 is the average score this year, but they are playing after a while. So remember that. And pace and spin ka distribution dekhen, so pacers have bowled more overs and of course relatively have taken more wickets. So that is the venue data. Now changes. How did you not play Shardul? I mean, it is still beyond me how Shardul Thakur did not play that game, especially after the last game. I know Deepak was fit, but just being fit doesn't mean you walk into the side. So let's see. Deepak hasn't enjoyed, playing outside Chepauk. So we discussed that in one of our previous videos. तो याद रखना, I am expecting Shardul to play. कल भी हमने देखा था जो changes हमने expect करते हुए. Yes, तुषारा ने wicket नहीं लिया, but क्या ही bowling करी भाई कल तो. Mumbai के games are always going to be tricky. Or yes, I already spotted a comment about Surya being my captain again and him not working. So let's see. देखो ये अपन एक एजेंडा चला के चलेंगे कि मैं स्काई को कैप्टन नहीं बनाऊंगा, आप बनाना, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन आई मेक हिम द कैप्टन. तो LSG आई थिंक कुड बी अनचेंज्ड बारिंग एनी फिटनेस इश्यूज. मयंक इज स्टिल इन लखनऊ ओनली फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, तो वो नहीं खेलेंगे, बट रेस्ट दे डिड नॉट नीड मच हेल्प इन द लास्ट गेम. तो आई डोंट सी मच चेंजेस देयर. बाकी शिवम दुबे कुड बी द इंपैक्ट सब. इट इज बीन रहाने, बट शिवम दुबे कुड इवेंचुअली, इफ रहाने इज फिट इनफ तो फिर रहाने विल स्टे ऑन द फील्ड and Dubey will go off. Fateh Rana again should be the impact sub then. Or Deepak Gupta if they want extra batting, or Yash Thakur can come in, or even Siddharth at Chennai. That could be something to watch out for. But for now, let's go to the overall stats जिसके बारे में हम हर गेम में बात करते हैं. तो among the bowling units in the middle overs,
these two teams are the best economy. 7.2, 7.8 Lucknow and Chennai. गेम बना रहे हैं 20 के ओवर्स में. हु इज बॉलिंग देयर? जडेजा इज बॉलिंग देयर. मोइन एट टाइम्स बॉल्स, बट अदरवाइज आप देखें तो कंट्रोल बना के रख रहे हैं दोनों टीम्स विद द बॉल. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दीज टू साइड्स ट्राई एंड ब्रेक फ्री. बिकॉज आप देखो बेस्ट बॉल्स पर बाउंड्री चेन्नई 9 बॉल में एक बाउंड्री कंसीडर कर रहा है, लखनऊ 6. तो दैट इज देयर. बट जडेजा इकोनॉमिकल डाल रहे हैं, बट टुडे कुड बी द गेम वेयर दे नीड अ लॉट ऑफ विकेट्स, क्योंकि चेन्नई में विकेट्स लेने पड़ेंगे और पाथिराना को जल्दी लाना पड़ेगा, स्पेशली इन द 8th और द 9th ओवर इज व्हाट आई फील, जस्ट लाइक हाउ यू यूज्ड ब्रावो. बट ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कैसा विजुअलाइजेशन हो सकता है. सो दैट इज द बॉलिंग यूनिट डूइंग वेल इन द मिडिल ओवर्स. आफ्टर दिस, Gaikwad's lowest average against an opponent is Lucknow. 3 matches, 75 runs. He has had 150, and again, he's batting at 3, getting himself in. Hopefully, he'll be able to make a good one because both change ho gaya hai. Rachin is not able to give you good starts. Rahan is trying his best, swing away in the power play, but wo ho nahi raha har baar, and he's getting starts. So Gaikwad batting big is very, very crucial. We saw what Jaiswal did yesterday. Despite having a decent number against Mumbai in the past, he went on to score a century. So that is something that Chennai will hope Gaikwad can do with the bat for them. And Deepak Chahar, fun fact, yet to take a wicket against Lucknow. I just hope they use him well today. और अगर second bowling कर रहे हैं तो मैं फिर भी एक बार दीपक पे रिस्क लूंगा. First bowling में अगर, because ये चेन्नई का डेक अगर स्लो है तो power play will be the best time to bat. So they really have to be very, very smart today, Chennai, in terms of how they use their bowling options. And again, this is because I'm backing the home side to come good. So let's see how that works out. And similarly, from one end of poor record to the other, so Quinton hasn't had success at Chipok. 7 games, 74 runs, average 10 का है. और जैसे वो खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है भाई मैं तो 15-20 बॉल खेल के जाऊंगा. तो again, Quinton de Kock is someone who thrives if other partner is doing well. If KL Rahul who's changed his game better, तो KL Rahul ने अटैक करना शुरू कर दिया, which is good signs for him. तो that could help Quinton settle down. But if they bowl more early, I really feel, they can get him out early. But if they don't get him out early, by Quinton, चिपक जाएगा, एक एंड पकड़ के बैठा रहेगा, and then it will free up KL, Poor and everybody to hit along. So that is how I think Lucknow will look at it. Get in Quinton, don't get out to Tushar or Moin, and then you can go ahead and have fun. बाकी चेन्नई will hope they take their catches also. तो अल्टीमेट लेवल पे आते हैं, बाकी सबको पता ही है. तो अल्टीमेट लेवल में who keeps? I have kept all 3 keepers, KL, Pooran and Quinton de Kock. Now again, KL Rahul, safest option. There is no need to take a risk. I keep saying small league में common captain के साथ risk तभी लो जब आपको बहुत strong gut feel है. तो if you really feel strongly, no यार KL Rahul out हो जाएगा, दीपक चहर will take him out, तो फिर please go ahead and take, or Fizz will get him out. तो feel free to drop him, और मतलब drop him from captainship. but मैं small league में वो risk नहीं लूंगा. KL Rahul will remain the captain, keeping भी कर रहे हैं, stumping catching के points मिलेंगे. Nicholas Pooran has had success against this side in the past, और जिस पीरियड में वो आते हैं, यस पाथिराना का ट्रबल होगा, बट यू फील ही शुड बी एबल टू काउंटर इट इफ दे गेट अ गुड स्टार्ट. क्विंटन डी कॉक को स्मॉल लीग टीम में रखा है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में जरूर उसको ड्रॉप करूंगा, बट स्मॉल लीग में रिस्क लेके कोई पॉइंट नहीं है. तो दैट इज द 3 कीपर्स. एमएस को लेने की इच्छा बहुत है, बट अगर आप चेन्नई के फैन हो तो आपको चाहिए कि उसकी बैटिंग तोड़ी आए और वो इम्पैक्ट नॉक खेल के जाए. पर अगर नहीं आएगी तो भी चलेगा, बिकॉज यू वांट द टॉप 3 एंड द टॉप 4 टू बैट रियली बिग फॉर देम. तो दैट इज द कीपिंग सेक्शन. बैटिंग सेक्शन में अगर आप आएंगे तो अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 प्लेयर रखे, दैट इज शिवम दुबे एंड ऋतुराज गायकवाड़. अब विकल्प यहाँ पे बहुत सारे हैं. नाउ पडिक्कल इज नॉट प्लेइंग एनीमोर फॉर लखनऊ, तो वो एक ऑप्शन होता था आपके लिए. दीपक हुड्डा अगर आपको लगता है कि वो खेल के स्टार्ट करेंगे. बडोनी इज अ डिसेंट ऑप्शन, स्पिन अच्छा खेलता. रिमेंबर ही प्लेड वेल अगेंस्ट दिस साइड व्हेन दे प्लेड लास्ट ईयर इन लखनऊ इन द रेन कर्टेल गेम. रहाणे का भी ऑप्शन है आपके पास. रिजविया आई थिंक इट्स डन, दे विल हैव टू यूज देयर रिसोर्सेज बेटर नाउ. और रचिन रविंद्र बहुत ही एक टेम्पटिंग पिक है. आई नो मौसिन का खतरा है, बट आई थिंक दिस कुड जस्ट बी द गेम. अगर मैंने हर गेम में बैक किया है तो इट्स अनदर गेम वेयर आई विल बैक हिम इन माय मिनी जेल्स के. एक गेम रचिन का आएगा, वरना ही विल गेट ड्रॉप्ड फॉर डैरल मिचेल, एंड हू नोस डैरल मिचेल मे गो अप द टॉप. तो यूजुअली चेन्नई चेंज नहीं करती इतना, तो लेट्स सी वेदर दे मेक दैट चेंज और नॉट, और वेदर यू मेक दैट चेंज और नॉट. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो अभी के लिए ये 2 हैं, और मैंने गायकवाड़ को वाइस कैप्टन नहीं रखा क्योंकि मेरा वाइस कैप्टन है रवि जडेजा. पिछले गेम में ऊपर बैटिंग करने आए, और क्योंकि मोइन अली खेल रहे हैं एंड दे वांट टू सेंड जडेजा हायर अप द ऑर्डर टू गेट हिम सेटल, तो दैट इंक्रीजेस हिज फैंटेसी पोटेंशियल. और आपको पता है 3 ओवर तो डालेंगे.
पिछले गेम में केकेआर के खिलाफ he took out left handers. Today could be another day where he bowls good lines, good lengths. He could get 2 wickets. तो जडेजा in terms of dual role value से मैं उनको वाइस कैप्टन रख रहा हूँ. मोनली को मैंने टीम में रखा है because I expect him to bowl. बाकी that is the difference between Ruturaj Gaikwad and MS Dhoni का captaincy, and that is okay. Every captain finds his way. So let's see how that works out for Ruturaj. Many people will bring Krunal Pandya in this game. So if you want to drop Moeen Ali thinking Moeen Ali will not get enough bowling, feel free to pick Krunal Pandya. I think Chennai would have learned the lesson, and that is why I am not making him as the captain or vice captain or even keeping him in my side for now. So that is the all-rounder section here, with Jadeja being the vice captain. Other options also discussed. Bowling section में चलेंगे तो who bowls में पातिदाना, मुस्तफिजुर, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई. Again, both options from Chennai very straightforward. Left arm पे इसको काफी विकेट्स दिए लखनऊ ने, पर मुस्तफिजुर had an off game in the last one. पातिदाना came in too late, still took 1 wicket, but एक बहुत अच्छे differential vice captain captain option रहेंगे. I don't know how much differential he is, but very good option if you feel they'll do well, because for Chennai to win, Dube and Patrana have to do well. तो वो visualization से they are very very critical. मोहसिन खान again value with the new ball, और एंड में भी डाल रहे हैं, विकेट लेके जा रहे हैं, रखना बनता है. यश ठाकुर को आप ले सकते हो उसके बदले, no problem there. And Ravi Bishnoi, last time he played here, he took wickets as well. So again, fairly straightforward options here. 3 keepers, 2 batters, 2 all-rounders, 4 bowlers. All of these are very obvious. So ये game, like the last one, will come down to captain, vice captain. तो और आपको options चाहिए, feel free to check out the cricket section, because again, safe choice जडेजा केएल, हमारा भी वही है. Top picks केएल जडेजा, हमारा भी वही है. High risk, high reward, तुषार देशपांडे, रवि जडेजा. Wow, it has MS Dhoni also. High risk, high reward, मोहसिन खान, मनीषा पतिराना. Have a look. Have a look at the entire team and then take a call. Okay, does this visualization make sense? Okay, it does. I think I can back it. तो एक कोई visualization पकड़ो for grand leagues and then make multiple changes or a few changes and make multiple teams accordingly. And as I keep saying, हमेशा अपनी visualization को back करो, because that is what separates you from everybody else. तो सुनिए सबकी, करियर खुद की, because eventually it is your money and you should invest very very smartly. तो लिंक आपको मिल जाएगा ऐप का डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना, आपको ये सब कुछ वहां पे दिख जाएगा ऑफकोर्स फॉर फ्री. तो बिग टिप, रचिन रविंद्र है, एक गेम आएगा, मुझे नहीं पता कौन सा वाला, पर एक गेम आएगा, और ये अगर ये वो गेम नहीं है, देयर इज अ गुड couple of games at home, and if Rachin doesn't come good now, I really feel things could change for him and not in a good way. तो लेग स्पिन से खतरा है बिश्नोई का. लेफ्ट आर्म पेस ने भी आउट करा है पिछले गेम में, मोहसिन गॉट हिम आउट. तो यू होप Rachin can give himself time, क्योंकि अगर वो अपने आप को टाइम देंगे तो he'll score well. I think at this point of time, I feel he's rushing into his shots. I hope he can take a leaf out of Jaiswal's book. Jaiswal was troubled by Kodja, but he stayed there, found a way to get in, got himself a score. But what is important for that is the other end to help him, and that is what is not helping Chennai. क्योंकि जब कॉनवे चलते थे तो गायकवाड could take time. गायकवाड चलेगा तो कॉनवे could take time. At this point of time, Rahane is going at times very risky. So Rachin is also wanting to feel, let me also give that quick start, but you don't have to do it every time. So let's see if Rachin takes time, because if it's a slower deck, slight to hold there, I think power play could be the best time to bat, and that's where I'm hoping Rachin can make a difference. So this is a purely grand league big tip. It is not a small league big tip. You can back him only if you are very sure. I'll try him in one of my few teams. May not even keep him as captain, just keep him in the side. क्योंकि अगर पिच में टर्न है तो he can bowl. तो let's see whether that happens or not. इसके अलावा 3 options, other ones very very in form or in the team options based team. Ravi Bishnoi, because bowling well, deck अच्छा होगा, boundaries थोड़ी बड़ी हैं. Nicholas Puran enjoyed playing Chennai, और मोइन अली अगर bowling नहीं करते और पातिराना doesn't dismiss him, then Puran could have a proper Puran holiday, and of course पातिराना, क्योंकि पातिराना है भाई. तो LBW बोल्ड के वैल्यू आपको, पॉइंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे. सो दैट वाज दैट, एज प्रोड्यूसर साहब सेड, ज्यादा सेम चीज पे बात मत कर, फटाफट पॉइंट पे आ. तो लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड टेक द कमेंट्स नाउ. बाकी लेट्स गो टेक द कमेंट्स. थोड़ा सांस ले लिया. पांच सेज, भाई क्या ये पॉसिबल है कि आज पिच हाई स्कोरिंग हो सकती है?
क्योंकि लास्ट ईयर के मैचेस 200 प्लस वाले हुए थे। पांच साहब, मैंने कल वॉच अलॉन्ग में एक कमेंट किया था कि ट्राइंग टू रीड पिचेस इज लाइक ट्राइंग टू रीड रिलेशनशिप्स। नहीं पता चलता भाई, नहीं पता चलता। जो वहां पे है उनको भी नहीं पता चल रहा, तो हमें हमें तो क्या ही पता लगेगा कि कैसी पिचेस होंगी। बट केकेआर वाले पिच सरप्राइजिंगली स्लो थी। आई थिंक दिस वन विल बी सिमिलर, एंड अभी से सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल विल स्टार्ट टू सी स्लोअर डेक्स, बट कितना दैट आई डोंट नो। इम्पैक्ट प्लेयर है, रिलेटिवली फ्लैट है, तो बड़े स्कोर फिर भी बनने चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 6-7 विकेट्स टू स्टिल फॉल for 170-180 runs. So that is my visualization. But again, we'll have to wait for to see the pitch in that accordance. So that is that part. I hope बाकी सबने अब तक already like कर दिया वीडियो। 45 view watching, रोहित शर्मा का नंबर है, of course we remember। एक like कर दो यार, सही है। Nurelax with Vasan says usual attendance liked as usual. Niks Padi, thank you so much Nurelax, very good boy। If LSG match, you know who would be here for sure। बिल्कुल, and I'm very happy that you have not played at a KL Rahul century today। Very smart of you and very good on you, because it helps। Baki, I know I already read that Chinmay comment, so but we'll still take it, which says your big tip for MMA matches should be you to not captain Sky, but still tell us viewers to captain him। बिल्कुल sir, Chinmay, point noted। आज के बाद any match that Sky plays, I am not making him captain, at least in my main team। I'll give it to you। इतना अपन कर सकता है तुम्हारे लिए, प्लीज किसी और टीम में किसी और प्लेटफॉर्म पे बना दूंगा ऐसा रहेगा तो, पर टेंशन मत लो, अपन विल कवर इट अप। Nurelax said good। Should they play someone like a Charak since Mayank isn't fit yet and play Myers in 3 in place of Huda? ठीक है, मायर्स को खिलाओ, मोइन अली कैन bowl, take two wickets in the power play। I am more than happy, please। Also, another reason last time Myers played such an impactful knock. So do you see this happening next? I told you last time they did not bowl Moin Ali in the power play for some reason। Today, if they bowl Moin Ali to Kyle Mayers and Quinton de Kock in the power play, he has got KL Rahul out as well। Don't be a Faf guy, God। I know you like Faf, but Moin Ali can bowl to righties also। So don't be a Faf and say कि righty है तो मैं off spinner नहीं डालूंगा। KL risk लेगा तो it is worth it। बाकी तो we keep trying। We don't know how the game will eventually pan out। So that is that in terms of relax Myers playing or not। Baki floating hard, yep, I see you are here, good to see you। He says today risking de Kock as my captain, very very brave call, but as I said, if he get himself a start, then Quinton is someone who can give you a good 40-50 without, he does take a few risks at the start, so once that is taken care of, I think he'll be good। Baki Anand Damre, nice to see you। He says Rahane and Gaikwad may open 3 at Mitchell। Yes, I completely relate to it, which is why I feel one last dance for Rashid Ravindra। If not today, go ahead and do Jai Mata Di, no problem there। But whatever happens from now, you stick with it। इसके बाद चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो Chinmay says does Jaddu come ahead of Dubey and Moin today as well? I think it will be entirely situational call। If they lose wickets in the power play, then Jadeja will come in to stabilize। Dubey's entry point I think is post power play 7th or 8th over। So 5th 6th over में अगर wicket, I won't be surprised if Jaddu comes out, or even 9th over। So it will be entirely dependent on how many overs Krunal Pandya and Vishnu had, because remember in the last game Lucknow got Stoinis to bowl to Dubey and he bowled short। So this time I am hoping Shivam will be better prepared for that। So that is Chinmay। Baki I think Karan, Nikhil sir space क्यों नहीं आते? सर स्पेस में आएंगे, जब स्पेस मिलेगा तब स्पेस पे आ जाएंगे, कोई लोड नहीं। अब हम वापस आ गए हैं, काफी टाइम है हमारे पास, तो बिल्कुल आ जाएंगे। बाकी we also have Pinku's comment we can take once, so that just to clear। ही सेज आप टेलीग्राम पे देते हो या नहीं सर? नहीं सर, कोई टीम टेलीग्राम पे नहीं देते हम, आपको टीम cricket.com के ऐप पे मिल जाएगी। तो वो चेक कर लेना, टेलीग्राम पे टीम देके सब दे रहे हैं टीम सर, क्या ही पॉइंट है। तो यहाँ पे बेस्ट टीम आपने देख ली है, क्रिकेटर्स की टीम से एक बार देख लेना, एंड गुड लक पिंकू भैया। होपफुली आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक किया होगा। और चिन्मय का भी कमेंट था, वो भी वी कैन टेक पातिराना कैप्टन। एग्जैक्टली ओमकार, समथिंग चिन्मय आल्सो आस्क्ड that Prathirana captain if bowling first, absolutely no brainer, and you expect that to happen क्योंकि hitting the stumps, the lineup that Lucknow have, he should be able to create a couple of chances, even more so while. So I think I'll keep Prathirana definitely as an option while bowling first, and again I had him in the big tip for the very same reason। So yes, you should definitely have that option done।
Chinmay says, need to pick two out of Dubey, Rutu, Pathirana, and KL for my season now. Please suggest. KL Rahul, hands down. KL Rahul and Pathirana, two people, safest options, long-term options as well. Baki to, you can always back your visualization. And I think Moin ke bare mein bhi comment that we can take, because I mean, Moin is someone who I don't think England used well. And very, very surprising. Yes, Raghuraj, I completely agree with that aspect that he could be a game changer today. He was a player of the match in one of the games that these two sides have played. I had been captain in one of my teams as well. Lot of lefties, and he's a very canny bowler. But see, this is where we'll have to wait and give Ruturaj time and understand that Ruturaj will captain different as compared to MS. So the things that felt very, very obvious with MS will not be so with Gaikwad. So थोड़ा time देना पड़ेगा. But if he bowls, I will 100% be very, very sure of him doing well. Baki, he has to bowl at the right spot. So 50, good half century there. So एक like कर दो before you go, because what else we here for? We can do this content a lot more, और हमें भी सबको number meet करने थोड़े थोड़े. तो let's continue to keep that going, and of course subscribe तो कर ही दिया होगा आपने. And I think we can wrap up with New Relax ka last comment, which is, what are they doing with Moin? Not giving batting, not giving bowling. Better play someone else like Sandner. Don't let Sandner in this. Don't let Sandner in this. Sandner का स्क्रीनशॉट लेके जाएगा कि फ्लेमिंग भाई अभी तो cricket.com पे भी फैंटेसी लाइव में भी बोल रहे हैं कि सैंडर को खिला दो, पर नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं कर सकते भाई. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन. 21 minutes on a one match day is always a pleasure to be able to talk cricket with you. So thank you so much for tuning in and staying till the end. Hope you've already liked, share this video, and stay subscribed, because a lot of good content coming up from cricket.com. Fan game है, watch along है आज, तो जुड़ जाना उसके साथ. And बाकी have a good game. See you soon tomorrow, same place, same time. cricket.com Fantasy Center. This is Nikhil Popat signing off. See you. Cheers.